You should wait for क्या 2-3 मिनट में हम और वेट कर लेते हैं. Okay, ठीक है. Takes a little bit of time to get together. That's fine, that's fine. पानी की एक बोतल में वो दिखे. अच्छा उधर पड़ी हुई है. Okay, ना उधर मेरी नज़र जो है वो वहाँ पे आई थी. Okay. ये कुछ है यानी मंथली केडेंस रखी हुई है या ये बस वो जब मौका मिले? जब मौका मिले. ओके. सो बंदे जो के टेक वाला है भी शौक और बोलने का भी शौक. That's a rare combination. That's a rare combination. But it's not that rare. Some people have it. That's what you want. सही है. हमने एक तो टॉक सीरीज में लोग एंगेज नहीं कर सकते तो मुश्किल हो गया था तब. We have to be little careful. हाँ. कि भाई सारे के साथ आते हैं और उसके बाद यार sort of expectation के दिल learn something very quickly. So it has to be somebody who can speak well. Not be that. So आप great. नहीं खैर वो जो स्पीक वेल का मुझे नहीं इतना पता. ये ज़रूर है कि जो टॉपिक एट हैंड है उसके बारे में कोई 2 लफ्ज़ बोले जा सकते हैं. लेकिन पोस्टग्रेस में कौन यानी कोई रेगुलरली जो है वो एनीबडी हु वर्क्स विद पोस्टग्रेस ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर हियर. पोस्टग्रेस का नाम पहले सुना हो यार प्लीज़ ये बता दो. नाम सुना हो. Last project I was using Postgres, not like extensively, but नहीं वो It's a protection system. अच्छा ओके. नहीं वो पोस्टग्रेस के साथ जो है ना वो एक चैलेंज ये मेरी एसोसिएशन जो है वो तब से है जब से मैं यानी अगर पोस्टग्रेस का नाम लेता था ना तो अगले जो है वो शक्ल देख रहे होते थे. यार आर यू श्योर यू आर सेइंग इट राइट. इस टेक्नोलॉजी का तो नाम हमने नहीं कभी पहले सुना. ये तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की चीज़. कोई पोस्टग्री कह रहा होता है तो पोस्टग्री एसक्यूएल. नहीं ये जो कम्युनिटी वाले बड़े सेंसिटिव हैं इसके ऊपर. यू कॉल इट समथिंग अदर देन दैट यू नो देयर मेनी पीपल हु टेक ऑफेंस ऑफ इट. सो पोस्ट यू आइदर कॉल इट पोस्टग्रेस और पोस्टग्रेसक्यूएल. ठीक है तो पोस्टग्री अगर कहेंगे तो वो इतना कहेगा नहीं पोस्टग्रेस और पोस्टग्रेसक्यूएल. और दिस वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी बेगम जो है कॉन्वर्सेशन चल रही है. एक मतलब डेबू पे बैठ के जो है कहीं से आ रही थी वो वापस इस्लामाबाद आ रही थी तो उसके साथ कोई खातून बैठी हुई थी तो वो गपशप लगनी शुरू हो गई. तो उन्होंने बताया कि जी वो उन्होंने कंप्यूटर साइंस की जो है वो ग्रेजुएट है. खातून जो साथ बैठी हुई थी वो पता नहीं फलानी जगह के पर नौकरी करती हैं. तो मेरी बेगम कहती है कि हाँ यार मेरा भी जो मियाँ है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है. तो वो अगली ने पूछा कि वो क्या करते हैं कंप्यूटर साइंस में. इसने बताया कि पोस्टग्रेस में कोई काम करते हैं. तो कहती है नहीं आपको कोई गलती लग रही है. इस नाम से कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती. तो वो अब बेगम भी जो है वो ऐसे है ना को आगे से कहती है कि मैं फिर एक लम्हे के लिए ना रुक गई यार शायद मेरे से ही गलती हुई है कोई. कौन ना चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं. लाइव वाला जो लाइव लिंक ऑन है. लाइव हमने किया. ओह ऑलरेडी वी आर लाइव. ओके दिस इज गोइंग ऑन YouTube सो परफेक्ट. आई होप योर वाइफ ये वाली हाँ ये वाली चीज सेंसर नहीं की जा सकती. हाउ वेयर दैट वेंट बट चलिए ओके लेट्स स्टार्ट. सो Assalamu alaikum. First of all, everyone, thank you for showing up. There are more people joining, and I hope there are a few people online as well. Umair, thank you so much for coming. It's a pleasure to have Umair over here. Umair की आपने description भी देखी हुई है. He's been in this area for Postgres for a very long period of time. I guess I was introduced to Postgres through him very early on because of his very passionate, प्रोसेटलाइजेशन ही होनी चाहिए कैसे इसके बारे में अबाउट द टेक्नोलॉजी. आई एक्चुअली रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज व्हेन आई वाज रनिंग माय स्टार्टअप. वो IoT की थी. उसमें आई वाज यूजिंग कैसेंड्रा एंड वी हैड अशोक ने बुलाया हुआ था एक सॉर्ट ऑफ आई थिंक इफ्तार थी. एंड देयर आई मेंशन्ड दैट आई एम यूजिंग आई इवैल्यूएटेड Postgres and Cassandra and I went with Cassandra because IoT real time use case है. उस पे he ticked off and he gave me like a good 10-minute lecture on why Postgres can do everything that Cassandra can do and Cassandra is shit. And although I agree Cassandra is shit, but not for the same reasons. And we moved on to something else. But I still remember uske baad sort of the clarity that this guy really knows Postgres in the community and then the technology was there in my mind. Subsequent interaction has just made that very clear to me. He's actually really privileged to have them because ऐसे लोग जो कि एक international technology के sort of thought leaders हों वो पाकिस्तान में कम होते हैं. He's one of those. He's worked with 2 big companies. एक तो second quadrant थी उसके बाद you went to
Oh, the second one was. So second quadrant से आगे जो है I went to Percona, but before that I was with EDB. Oh yes. Percona में थे, so Percona was a big thing, and I think he's also given lots of talk at Postgres' international symposiums and conferences. So it's going to be a pleasure to have him over here. I also know he's a fun speaker, so you'll enjoy that conversation as well. So Expectations high set कर दी हैं आपने. जी बिल्कुल. Now it's going to be difficult for me to carry this on. And make it work. Thank you so much, man. Thank you so much for that very kind introduction. तो वो हमारा जो है ना वो तो मेरा मजाक एक बना हुआ है, जिस तरह से वो अभी अफान ने कहा ना कि भाई कैसेंड्रा के ऊपर जो है फिर मैं बोलना शुरू हो गया कि नहीं कैसेंड्रा क्यों, पोस्टग्रेस क्यों नहीं. तो वो अशोक ही जो है वो मुझे कहता है कि मैं कभी तुम्हें कहूँ ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो तुम कहोगे कि पोस्टग्रेस लो, इसीलिए सर में दर्द का भी हल जो है ना वो पोस्टग्रेस है. तो टू दैट एक्सटेंट. But yeah, pleasure to be here. Topic of conversation today is clustering in Postgres. Clustering को जो है वो choose किया because ये एक area है जो कि थोड़ा सा जो है वो शायद इसे कम importance मिलती है, या जितनी importance की होनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है. People underestimate the value that a cluster brings. किसी भी production environment के अंदर it's extremely important for your database to be very very resilient. I honestly believe that even two databases together are not enough. कम से कम जो है वो 3 होने चाहिए, 3 का क्लस्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. And we'll cover a few topics in here जिसकी जो मैं I'll try and prove this कि हाँ वाकई आपको जो है ना कम से कम 3 servers चाहिए हैं. A little bit about myself. So if you work with PSQL, you'll recognize the prompt. But yeah, home base मेरा जो है वो इस्लामाबाद में ही है, इस्लामाबाद में ही हमेशा से हूँ. I've been working with the Postgres project for more than 20 years. मेरा पहला exposure जो है वो 2003 में हुआ था, तो yeah, pretty much 20 years. और at that time I was working with this group that was trying to evaluate कि कौन सा open source database use किया जाए so that it is easier for people to move away from proprietary Oracle into an open source space. That, we happened to stumble upon, well, not really stumble upon, there was a very focused research. उसके अंदर जो है वो Postgres को हमने select किया, उसके ऊपर जो है वो फिर उसका एक fork बनाया, fork के ऊपर कुछ एक Oracle compatibility की layer चढ़ाई so that people can actually move from Oracle to Postgres very easily. That company was then later known as EDB, which is at the bottom left where I started my journey of Postgres. उसके बाद OpenSCG का part में रहा, that stands for Open Source Consultants Group, focused on यानी कहने को जो है वो open source consulting थी, लेकिन pretty much all Postgres. Then I moved on to second quadrant where I was the head of product and marketing at the company. And then the latest stint was at Percona where I was the head of Postgres. These are all very global roles. So, I was lucky enough to be exposed to the global community, exposed to the global user base, और interesting जो है वो कुछ जो है वो perspectives जो हैं वो मिले as part of this. But most lately, what I've kicked off is a new venture by the name of Stormatics, focused on providing Postgres solutions for the enterprise. और इसका जो है वो basically मकसद जो है वो clustering और analytics की जो है solutions provide करना है, that is backed by 24/7 support. And clustering is what I want to tackle as part of today's topic. Postgres क्या है? For those of you who already work with it, have already heard of something. तो एक तो सबसे पहले जो है pronunciation जो है वो correct कराना बड़ा ज़रूरी है. So it's either Postgres or it's PostgreSQL. ठीक है? It's not Postgre, please. किसी को जो है वो offend कर सकते हैं आप Postgre कह के. तो it is Postgres or PostgreSQL. I think एक community के अंदर जो है ना वो एक काफ़ी अरसे से एक movement चल रही है कि आखिर का QL जो है ना वो निकाल ही दिया जाए नाम से, ये confusion ही पैदा करते हैं. Let's just call it Postgres. अब वो कम्युनिटी किस तरफ बैठती है देखते हैं, लेकिन आई थिंक EDB ने तो अडॉप्ट कर लिया हुआ है पोस्टग्रेस का नाम. वो कह रहे हैं कि भाई हमने QL जो है वो निकाल ही दिया है, इट जस्ट कॉजेज कन्फ्यूजन. आई थिंक आई एग्री, बट टिल द टाइम द कम्युनिटी इज कॉलिंग इट PostgreSQL, आई विल जस्ट कीप writing it that way. It's an open source object relational database. It extends the SQL language, ACID compliant. ये तो बड़े बेसिक जो है किसी भी relational database के अंदर ये सारे features होते हैं.
लेकिन इसके अंदर जो फोर्थ बुलेट है ना, ये दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मैंने कल रात को बैठ के जो है ये अपडेट किया बुलेट, ये कल रात से पहले जो है ना, दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड SQL 2021 कंप्लायंट। ये 23 मैंने कल रात को जो है वो ऐड की है। वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स ऑफ Postgres इज पीटर आइजनट्रॉट एंड ही इज वर्किंग विद द SQL स्टैंडर्ड्स कमेटी टू राइट द 2023 स्टैंडर्ड फॉर SQL, ठीक है। और उसने जो है ये नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसने अपनी ब्लॉग के अंदर जो है कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। 2023 का जो SQL स्टैंडर्ड है was published about a month ago and सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में Postgres 16 का वर्जन जो है वो रिलीज होना है and Postgres 16 will be fully compliant with the SQL 2023 standard, right? So this very interesting. एक मेजर रिलीज और 4 माइनर रिलीजेस एवरी ईयर कम्स आउट। जो मेजर रिलीज होती है जैसा Postgres 16 में जो है वो सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में आना है, दैट इज द टाइम फ्रेम वेयर ईच मेजर रिलीज कम्स इन एंड देन देयर इज अ माइनर रिलीज एवरी क्वार्टर जिसमें जितने सपोर्टेड वर्जन्स होते हैं has more than 700 contributors worldwide, thousands and thousands of commits, many different local user groups, and there's it is pretty much impossible to measure the amount of data that is currently stored in Postgres. मेरे ख्याल में अगर मैं इस रूम के अंदर भी जो है वो अगर क्वेश्चन पूछूंगा ना कि आप लोग कितना डेटा स्टोर करते हैं Postgres में, it might be hard to find that answer. Globally, it's even more difficult. Popularity of the database over the course of 10 years, DB Engines जो है वो it is considered to be an authority of databases and relational databases. Different जो हैं वो databases की जो हैं वो ranking हो रही होती है इसके अंदर based on keywords, job posting, forum postings, इस तरह की जो है वो popularity का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं based on such metrics. And over the course of 10 years, so these are the top 4 databases as per DB Engines, top 4 databases in the world. Amongst, I think, last count was engines जो हैं इस वक्त दुनिया में 896 exist करते हैं. Database engines 896 हैं. These are the top 4. And in top 4 के अंदर it's only Postgres that has on a consistent rising trend. Now, इसकी y-axis के ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि जो scale है वो different है, लेकिन it's a logarithmic scale, which means that if a database is going down in this chart, it's a logarithmic downward spiral, and if a database is going up, it's on a logarithmic scale. So काफ़ी interesting जो है वो popularity का trend है. Stack Overflow. Anybody over here who has never ever copied and pasted an error and gotten a link of Stack Overflow? गूगल के अंदर किसी ने जो है कभी कॉपी और पेस्ट किया हो अपना एरर जो आ रहा है और स्टैक ओवरफ्लो का लिंक नहीं आया, स्टैक ओवरफ्लो किसी ने नहीं यूज़ किया? नो वन. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड. कहते हैं कि डेवलपर्स जो है ना वो 70% स्टैक ओवरफ्लो से बनते हैं, 30% उनकी अपनी स्किल होती है. तो अगेन डेवलपर प्लेटफॉर्म के फोरम के अंदर जो है इट्स द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म आउट देयर. और स्टैक ओवरफ्लो जो है वो हर साल एक सर्वे कंडक्ट करता है अपनी कम्युनिटी का, एंड इन दैट दे टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड दे पब्लिश दैट सर्वे. उसके अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं कि डेवलपर्स को आजकल क्या चीज़ जो है वो पसंद आ रही है. इन द 2022 सर्वे, फॉर द फर्स्ट टाइम, Postgres turned out to be the most loved, the most used and the most wanted database. तो तीनों कैटेगरीज हैं जो प्यार मोहब्बत दिखाने वाली डेटाबेसेस को, उसमें Postgres was at the top with developers. So definitely, very popular and gaining a lot of popularity. But enough about me and enough about Postgres. Let's go on to why we are here, and that is clustering in Postgres. High availability. Before we go to that technical, just one question. So Postgres अगर SQL implement कर रहा है, what is the thing that differentiates it from MySQL or other SQL implementation? Because everything now is coming up with an SQL implementation. Right. So when you say SQL implement कर रहा है, are you talking about the standard or are you talking about the standard? Right. I'm just trying to crystallize that part. It's actually, you talked about why it's famous, but what do you think differentiates it? It's an implementation of the standard, right? So now what part of that makes it so popular and all? So
there is the standard, and then there is the database. The database will always be a superset of the standard, no matter what database you're talking about. Right? It's not just Postgres, it's not just MySQL. It is always going to be a superset. So ये चीज़ें तो आपने कम से कम करनी है. इससे ऊपर आप क्या करते हैं वो that is the differentiation between the databases. ठीक है? तो अगर आपने comparison करना है Postgres का based on the standard, कि उस standard से आगे जो है वो क्या है. Now it depends on कि आप किस database के साथ compare करना शुरू करते हैं. So I'll give you an example. अगर आप Postgres को compare करते हैं Oracle के साथ, keep in mind that Oracle has existed since before the SQL standard existed. तो बहुत यानी जब शुरू में जब database invent हुए थे, जब Oracle ने जो है ये वाली ड्राइव शुरू की थी कि डेटाबेस भी कोई चीज़ होती है, आपने हर चीज़ फ्लैट फाइल में नहीं स्टोर करनी. उस टाइम के ऊपर Oracle was the one defining the standards, which now means at this time कुछ चीज़ों के ऊपर Oracle is actually in conflict with the SQL standard, क्योंकि SQL standard बाद में आया है. तो Oracle being the oldest database at times is in conflict with the SQL standard. Right? So that is one differentiation. Secondly, अगर हम MySQL के साथ let's say compare करते हैं, तो उसके अंदर एक जो main differentiation आती है वो आती है in the community that is actually driving the database development. MySQL की community जो है it's a closed community. It's not that everybody can just go in and start pitching in. It's a closed community which is governed by Oracle because MySQL today belongs to Oracle. Postgres की community जो है it's an open community. You and I, anybody can just go in and start contributing. It's an open community, it's a global community. एक community का major जो है differentiation होती है. Now, why that is important is because an open community drives more innovation. We talked about one major release every year. In each major release, there are on average 150 new features that get introduced. 150 new features that get introduced over the course of 35 years of development every single year. That makes a very feature-rich database, very feature-rich. So it's a superset of the standard then. Okay. Does that help? कोई और चीज़ before we start diving into high availability? Okay. One request. So मुझे भी ख्याल है वो मैं पहले बताया था हमारे because record करें बाद if you get a question and if you could repeat that briefly that will help the recording. Okay. Okay. So the answer that I gave was to the question of कि जो SQL standard अगर सारे ही databases implement कर रहे हैं, what makes Postgres different? Right? That was the question. So yeah, thanks for that tip. High availability. Who all over here have actually heard the term high availability भी कोई चीज़ होती है, right? Okay, so most of you know कि availability is something that is required and availability is something that is important. Essentially, the crux of it is कि even in the face of disaster, even in the face of software or hardware failure, your database continues to remain available. This is extremely critical for any mission critical applications. किसी भी application को अगर 24/7 availability चाहिए है, you need that database to be highly available. The example that I like to give is you go to an ATM, you try and withdraw cash. अगर आगे से जो है message आ जाए ATM out of order या issuer link down, सर मारने का दिल करता है अपना ATM machine के साथ. You cannot let that happen, right? You cannot have your link or your database going down on something as critical as financial transactions या anything that people have come to rely on in everyday life. आप नहीं कर सकते. So you have to make it available. Typically इसकी measurement जो होती है वो nines of availability में होती है. Number of nines of availability. Anybody over here who can tell me what nines of availability mean? या किस तरह से जो है वो define किया जाता है? You can take a first stab at it and then maybe somebody else can pitch in. Percentage of availability 9, that's how many nines are in your percentage? Yep. Yep. Anybody else? Okay. So एक table जो है वो मैंने बनाया है. 90% availability is 1 9. 99% is 2 nines. Right? And the table goes on to define up until 5 nines of availability. अब कहने को जो है वो अगर आप किसी को बताते हैं ना जी 99% जो है वो अप टाइम है हमारा,
99% is a big number. Database की दुनिया में it's only 2 nines. Database की दुनिया में 99% is not good enough. You have to go higher than 99% actually translates into 3.65 days of downtime per year. Right? तकरीबन 3.25 दिन जो है आपका database down है एक साल के अंदर. Unacceptable. Unacceptable. And even अगर आप 5 nines तक जाते हैं, which is 99.999% of availability, 5 nines तक आप चले गए हैं, even then you have got 5, तकरीबन 5.25 मिनट आपके जो है वो डाउन टाइम के रहते हैं एक साल के लिए. So when you actually translate into minutes and seconds of downtime in a database, that is when it starts to really hit in कि नहीं यार 90% is not good, 99% is not good enough. Even 99.9% may not be good enough because even that is 8.7 hours of downtime per year. Right? Depending on कि आपके SLAs क्या हैं आपके customers के साथ, आपकी जो है वो applications क्या हैं, maybe this is acceptable but this isn't, maybe this is acceptable but this isn't, maybe this is not acceptable but 8.7 hours is good enough. It depends on the SLA. अब ये availability achieve कैसे करनी है? That is where the entire conversation lies then. But here's another take on things. ये भी बड़ी एक frequent जो है वो चीज़ आती है कि भाई अब तो मैंने तो cloud पे डाल दिया database, तो cloud तो available है ना, इसमें तो अब now it is Amazon's headache and it is Microsoft's headache and it is Google's headache कि इसे जो है वो available कैसे करना है, ठीक है? अब मैंने cloud पे डाल दिया, now my database is 100% available, right? But you'd be wrong. That is not true. Here's why. ये Amazon की अपनी website के ऊपर, this is the URL, aws.amazon.com/rds/ha. ये इनका service level agreement है for RDS high availability. ठीक है? Look at the highlighted items. एक तो ये कि they only promise 3.5 nines. And they don't even promise that. They say they are going to make commercially reasonable efforts for 3.5 nines of availability. And that too only if you have multiple availability zone configuration. आप RDS के एक instance को spin up करके ये भी नहीं expect कर सकते. वो इसकी भी guarantee नहीं देते. Guarantee वो multi availability zone के अंदर भी नहीं देते. वो भी कहते हैं कि हम effort लगाएंगे अपना पूरा. अब उसके अंदर वो actual आपको 3.5 nines मिलते हैं या नहीं मिलते, you cannot even sue them because they say भी हमने तो commercially reasonable efforts लगा दिए थे. Now what does 3.5 nine mean? It's 4.38 hours of downtime every year. Anybody ever got hit by an Amazon outage? होता है? क्या होता है? Customer तो आके आपके ऊपर चीख रहे होते हैं ना? आप अगर कह दीजिए ये Amazon down हो गया, they don't care. अब आप क्या करें? And the one thing I wanted to point out is that what do they give you? You will be eligible to receive a service credit. हमारी और मशीनें इस्तेमाल करें. $500 का credit देने से इसके बाद. I mean, yeah, it's even if you try and justify. Even on fail cases, that's what I'm saying. Right. So it तो जो ये concept है ना कि भाई मैंने जो है वो cloud पे फेंक दिया database and now I'm good. You have to think beyond that. You have to think more than that, which is, why we talk about clustering. आपने on-prem है, आपका hybrid environment है, आपका cloud के ऊपर है, no matter what your configuration of the database is, if you want reliability, if you want extreme availability of your database, you have to think about database clusters. Right? अब clustering होती क्या है? At a very, very abstracted level, बिल्कुल जो है वो simplest possible जो है वो उसके components अगर हम लगाएं, तो 3 जो है वो हमारे पास सर्वर्स हैं. एक प्राइमरी है जो 2 सर्वर्स को आगे जो है वो डेटा को रेप्लिकेट कर रहा है और अल्लाह खैर सलाह. The application talks to the primary. It does a read and write from the primary, and standbys are basically there just to as subscribers to the primary database. This cluster together acts as a single database node, and there is an auto failover
in case the primary node goes down. Now, auto failover again is a newer term that I haven't used in this presentation yet. Auto failover का किसको पता है यहाँ पे? Can somebody explain to yes? So for example, if primary actually get a disturbance here, so you need to fail over the traffic to the standby servers. The auto failover से ये होता है कि basically जब आपका friend end होता है gate पे होता है उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पे route है. ठीक है. कि ये primary route होगी तो failover कर देगा to the standby. ठीक है. ठीक है. Fair enough. बिल्कुल. बिल्कुल ठीक है. Anybody else who wants to add to this comment? Auto failover. Okay. But primary does that with monitoring and making sure that it's hard to shut या तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है डायग्राम्स के थ्रू 3 स्टेप में समझाने की कि इसमें क्या है, बट लेट मी सी इफ इट वाज एक्चुअली सक्सेसफुल. तो लेट्स यू हैव अ सिचुएशन वेयर द प्राइमरी नोड व्हिच द एप्लीकेशन इज टॉकिंग टू गोज डाउन फॉर व्हाटएवर रीजन. ठीक है, आग लग जाती है, ज़लज़ला आ जाता है, वैसे ही जो है वो बिजली चली जाती है, व्हाटएवर द रीजन इज, इट गोज डाउन. What happens then? In an auto failover situation, one of the standbys is going to take over as the primary. Primary जो है वो उसे sideline कर दिया जाएगा. One of the standbys takes over as primary, right? And now the second standby, instead of taking it from the previous primary, the replication data, is now taking it from this standby. इधर से replicate करना शुरू कर दिया. The standby 1 gets promoted to primary. Standby 2 is now a subscriber to the new primary, and there's a new node that gets spun up and acts as the new standby. Okay? Very briefly speaking, in the simplest of manners, this is what auto failover is. Your primary node goes down, one of the standby takes over, and a new node is spun up so that you again have a 3-node cluster. Okay? Now, title क्या था topic इस talk का? Because one server is never enough and neither is 2. Here it becomes clear why even 2 servers are not enough, क्योंकि जब ये वाला transition हो रहा होता है, इस transition के दौरान if something goes wrong and you do not have this, now you're left with nothing to fall back on. So it's important that you have 3 servers जिसमें आप redundancy अपनी जो है वो increase करते हैं. And उस redundancy increase करने की वजह से you get the resilience of the database. Downtime आता है. Yes. जितना time लगता है इस पूरे process के अंदर इसमें downtime होता है. ठीक है, we'll talk about RTOs and RPOs in just a little bit. ठीक है, वो डाउन टाइम को मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होता है और कितना जो है वो आपके अंदर उसकी कह लें कि कैपेसिटी होनी चाहिए एब्जॉर्ब करने की. बट द डाउन टाइम, यस, इट डज हैपन. Yes. And the only reason why I don't call it master and slave is because it is no longer a politically correct term to use. ठीक है, तो वो master और slave ही जो है वो term use किया जाता था. The politically correct term to use is primary and standby. Right? So, one thing that I want you to explain is why are you saying, so the argument presents that standby is primary contract, standby 1 is becoming primary, standby 100 down to standby 2. But isn't that argument just turtles all the way down? We could say keep on going down to n. It does. इसलिए मैं ये कहा कि this is the minimal configuration that I believe is required, a 3-node configuration. इसके ऊपर अगर आप redundancy add करते जाते हैं तो it does cascade और उसमें ये है कि incrementally आपकी redundancy जैसे increase हो रही होती है उसमें जो chances of downtime या chances of total data loss उसके आपके reduce होते जाते हैं. But there's a point of diminishing returns. आप जितने ऐड करते जाएंगे यार कितने चांसेस हैं कि ये चीज़ जो है ये सारे के सारे फेल कर जाएंगे. ठीक है. Yes. Right. So the thing is कि एक नोड जो फेल हुआ है एक से जब आप दूसरे के ऊपर जा रहे होते हैं in practical life there are chances that what caused this failure may also cause another failure. अगर आपने अभी ये फेल ओवर हो रहा है और अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया रूट कॉज क्या है. ठीक है, अगर there's a fire and the primary has gone down और आपने सारे अपने नोड्स जो हैं वो एक ही डेटा सेटर के अंदर रखे हुए थे, अब तो वो सारे डाउन हो गए.
ठीक है। अगर लेट्स से वन नोड गोज डाउन और इट वाज अ नेटवर्क इशू, एक आईएसपी डाउन हो गया, ठीक है, और अगर वो आईएसपी जो है वही वाला आईएसपी है जो कि ये वाली रेप्लिकेशन कर रहा है, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट आईएसपी। नाउ इन दिस केस ये तो आपका जो है वो प्राइमरी बन जाएगा, लेकिन आपका ये स्टैंड बाय 2 जो है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। तो एसेंशियली द सेकंड फेल ओवर इज देयर एज रिडंडेंसी टू गिव यू इनफ टाइम टू असर्टन कि आपका प्राइमरी नोड जो है वो क्यों डाउन हुआ था, एंड मेक श्योर कि वो रीजन कैस्केड ना करे आगे। ये रेप्लिकेशन का टाइम कितना होता है आपका डिफरेंट इंस्टेंसेस यूज में? So that's a very open-ended question. ये डिपेंड करता है आमतौर पे कि डेटा की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, डेटा का वॉल्यूम क्या है, नेटवर्क लेटेंसी कितनी है बिटवीन द नोड्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपने रेप्लिकेशन किस तरीके की जो है वो इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। स्ट्रीमिंग रेप्लिकेशन है, आपकी फिजिकल रेप्लिकेशन है, आपकी लॉजिकल रेप्लिकेशन है, आपकी रेप्लिकेशन जो है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ सच पैरामीटर्स एंड सच वेरिएबल्स। तो एक नंबर असाइन करना कि भाई इतना जो है वो डिले होता है, इट्स हार्ड बिकॉज दैट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड कन्फिगरेशन टू कन्फिगरेशन। इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस, कि हम क्या करते हैं। Okay, failover, anything on failover? Anyone else? Okay. So, cluster की एक और टाइप, एक तो हमने failover जो है वो हमने कर लिया, तो failover के साथ हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। स्टैंड बाय के ऊपर डेटा तो जा ही रहा है, तो might as well balance your load, ठीक है। आप बजाय इसके कि आपने पूरा रीड और राइट का नोड जो है वो डाला हुआ है ऑन योर प्राइमरी, अब आप ये कर सकते हैं कि चलो राइट जो है वो प्राइमरी के ऊपर चले जाएं, लेकिन यू कैन एक्चुअली बैलेंस योर रीड लोड्स ऑन योर स्टैंड बाइज। अब क्या है कि प्राइमरी के ऊपर जो है वो लोड कम हो गया, वो सिर्फ राइट्स को जो है वो देख रहा है, एंड यू कैन एक्चुअली ट्यून इट फॉर राइट्स। आप उसके पैरामीटर्स को जो है वो ट्यून कर सकते हैं टू बी वेरी वेरी क्विक टू इंजेस्ट डेटा, और अपने स्टैंड बाइज को आप ट्यून कर सकते हैं रीड्स के लिए। तो आमतौर पर इस तरह की कन्फिगरेशन तब आती है when you are running analytics workloads on your standbys और आपका जो transactional database है वो primary होता है, that's when it happens. Now in addition to everything that we have discussed, इसके अंदर मैंने मेरे ख्याल में एक चीज़ जो है वो रह गई है, वो load balancing वाले arrows इसके अंदर नहीं है। Imagine that you could have read write on the primary, or you could also have write on the primary and reads on the standbys over here. लेकिन आपको disaster recovery के लिए you need to have backups and backups that are off-site. Backup आपका जो है वो वहाँ पे नहीं हो सकता जहाँ पे आपके ये वाले nodes exist कर रहे हैं, क्योंकि if the node goes down for for geographical reason or for, is not accessible due to power or natural calamity or network outage, backup आपका जो है वो फिर भी available होना चाहिए। Redundancy increase करने के लिए you need to have backups on an off-site location. And और ये backup जो है you can have incremental, you can have them on the cloud, you can have them on premise, and you can also sync them from your various nodes so that कि data आपके पास जो भी है backup के अंदर वो accurate है और वो up to date है। Now यहाँ पे जो है वो हमारे RTO और RPO के जो हैं वो concepts आते हैं। इधर मैंने वो जानबूझ के जो है इसकी वो एक्रोनिम में यूज़ किया, इसका जो है फुल फॉर्म नहीं यूज़ किया। RTO और RPO के बारे में anybody who's heard of it? What an RTO is and what an RPO is? No one. Okay, that's interesting. I thought कि कोई एक आधा बंदा तो होगा। So this is recovery time objective, और C के केस में it is P के केस में it is point. So an RTO is recovery time objective, RPO is recovery point objective. Recovery time क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम के लिए अपना डेटाबेस डाउन बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। कितने देर के लिए अगर डेटाबेस अनअवेलेबल है तो इट कैन स्टिल एब्जॉर्ब दैट। तो दैट इज योर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। जितना आरटीओ आपका कम होगा उतनी जो है वो आपकी कह लें कि जो डाउन टाइम है उसकी कैपेसिटी कम है। जितना आरटीओ आपका ज़्यादा है उतना आप जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आरपीओ मीन्स कि कितना डेटा लूज करने के लिए तैयार है,
as part of that recovery and failover and disaster recovery, how much data loss can you absorb? तो किस point के ऊपर जो है वो recover कर सकते हैं? So अगर हम जो है वो timeline देखते हैं, let's say we are working on a timeline. This is T0, or this is the time the disaster hit. Let's say आप जो हैं वो incremental backups जो हैं वो ले रहे हैं इन points के ऊपर. If you end up restoring this point, it essentially means कि आपका ये जो delta है, you've lost this data. ठीक है? ये delta कितना बड़ा है, that is your RPO. ठीक है? And our organization RPO. Right? So, largely driven by that, yes. कि आप कितना जो है वो कितने interval पे backup ले रहे हैं. But there's also point in time recovery in Postgres, जिसके अंदर जो built-in feature है, you can actually rewind it back to a certain point in time. ठीक है? So हो सकता है कि आपने backup तो अब ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो छोटा डेल्टा हो गया. Let's increase this a little bit. Let's say कि ये डेल्टा है. Let's say आपका बैकअप तो यहाँ पे है, लेकिन पॉइंट इन टाइम रिकवरी जो है वो आप कहीं इस पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हैं, which is Postgres का अपना जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म है. Now we're getting a little too technical. Wall logging. Anyone heard of it? Anyone knows it? Wall. So right ahead logging के ऊपर जो है वो रिलाई करता है Postgres. तो ये logs होती हैं जिसके अंदर सारा डेटा incremental write किया जाता है. It's not just about कि data actual table के अंदर कैसे reside कर रहा है, but how Postgres has processed that data and incrementally updated it and included it. ठीक है? वो wall files के अंदर जो है वो लिखा जाता है. Point in time recovery basically wall files में से होती है. But here is what not making sense. So you're assuming that the instance actually went down. So wall logs तो वो भी गए ना? Right. Now the thing is कि point in time recovery जो है वो तभी होती है अगर instance जो है वो up है, it became inaccessible for some reason. Oh, that's ठीक है? वो उस केस में होती है. Backup, so उस केस में ये वाला जो है वो डेल्टा बनेगा. लेकिन अगर instance जो है it's lost forever, then you need to rely on the backup. Okay. So ये थोड़ा सा जो है वो again it's more deep than I wanted to get into for the purpose of this conversation. लेकिन this is the difference between actual physical backups that you have on an offsite location versus आप wall logs के ऊपर जो है या wall files के ऊपर कितना जो है वो आप rely कर रहे हो. Right? Who all over here do not know anything about wall files? मैं उनके लिए जो है वो शायद gibberish बोल रहा हूँ अभी. Wall file. Everybody knows about walls? अच्छा नहीं. So wall basically is it's WAL. This is write ahead logs. So with every transaction that happens in Postgres, that takes place in Postgres, चाहे वो creation है, चाहे वो insertion है, चाहे update है, चाहे deletion है, वो log की जाती है. It is recorded in the shape of log files, and then these log files are translated into table format जो कि actual store होते हैं जब actual commit होती है. It is wall files that are sent over to your standbys for replication. It's not actual data, table से उठा के नहीं भेजा जाता, wall files जो हैं वो भेजी जाती हैं और उसी चीज़ को जो है वो फिर mimic किया जाता है, उसी transactions को mimic किया जाता है replicate करने के लिए data को. ठीक है? तो that's simply how Postgres architecture works. Wall के ऊपर जो है वो depend करता है. So that's why I said कि the difference between an actual backup and wall file. अगर आपके पास logs available हैं, it just becomes a little easier to recover from disaster. I just noticed we've got two brothers over here. Okay. मैं confused हो गया हूँ कि यार ये क्या हुआ है? Shirts भी एक जैसी पहनी हुई हैं दोनों ने. Sorry. अगर for example battery instance जिस wall logs आप कह रहे हैं कि standby पे भी आते हैं. For example आपका instance forever lose हो जाता है. तो standby को हम point in time लेके जा सकते हैं. Again, this is deeper into how you've configured it. जो point in time है वो instance specific होता है. Logs तो available होती हैं, लेकिन exactly जो है वो ये वाला आपका instance जो है वो कहाँ पे आपका जो है वो lose हुआ है,
और कहाँ से जो है वो ऑटोमेटिकली इसने जो है वो उठाना शुरू करना है। जो ऑटो फेल ओवर होता है उसके अंदर तो वो चीज़ यूज हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आपका क्लस्टर लूज हो गया और आपको जो है वो बैकअप से उठाना पड़ रहा है, उस केस के अंदर जो है वो दैट इज़ व्हेन योर मैनुअल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। उसको ऑटोमेट करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। और वो जो बैकअप वाला केस है डिज़ास्टर रिकवरी का, जो RTO और RPO होते हैं, ये आमतौर पे तब दे कम इन टू प्ले व्हेन यू हैव लॉस्ट अ क्लस्टर कम्प्लीटली। ठीक है, उसमें आप वॉल फाइल से रिकवर नहीं कर पा रहे, या ऑटोमेटिक जो आपने चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं उनसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन, ये RTO इसके लिए आपने टाइम में कितनी देर में जा रहे हैं, एंड RPO इसके लिए आपने मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कितना डेटा था उसके बाद आपने बैकअप किया, तो इट्स मोर कि जी आप इट्स नॉट लाइक कि आपका टाइम में फिक्स होता है, इसके ये अमाउंट ऑफ डेटा के बाद इतना डेटा अगर आ गया तो उसके बाद ये सेव हो जाएगा। राइट। सो टाइम इज कि कितना डाउन टाइम जो है वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है फॉर द डेटाबेस। सो RTO की बेसिस के ऊपर यू सेट पैरामीटर्स लाइक कि आपने फेल ओवर कितनी जल्दी कर लेना है। ठीक है, सो इफ आई गो बैक टू दिस, when this happens, some tool, some monitoring mechanism needs to determine कि हाँ database अब down हो गया है। ठीक है, अब वो determine किस तरह से किया जाता है? ठीक है, one way is there's a regular ping mechanism कि वो database के साथ जो है वो constant touch में है। ping के responses नहीं आए, उसने एक ping भेजी, दूसरी ping के ऊपर कह दिया कि नहीं भाई database down हो गया। ठीक है, इट कैन सो हैपन कि तीसरी पिंग के ऊपर डेटाबेस रिस्पॉन्ड कर दे, कोई एक टेम्प्रेरी ग्लिच है, लेकिन वो इमीडिएटली फेल ओवर कर जाए, बिकॉज कंपनी का जो है वो RTO बहुत कम है, वो टाइम जो है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ कि डेटाबेस डाउन है, उन्होंने फ़ौरन जो है फेल ओवर कर दिया। राइट, वर्सेस अगर RTO जो है वो थोड़ा सा लेट्स से 10 सेकंड का जो है वो एक RTO है, या 20 सेकंड्स का एक RTO है कि भाई एक टाइम के ऊपर डेटाबेस हमारा जो है वो अगर डाउन होता है 10 सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड्स के लिए, तो एप्लीकेशन उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है। उस केस के अंदर देयर माइट बी मल्टीपल पिंग्स दैट द मॉनिटरिंग टूल सेंड्स बिफोर इट डिसाइड्स कि हाँ नोड जो है वो वाकई डाउन हो गया हुआ है। इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है, तो ये इस तरह के पैरामीटर्स जो हैं वो सेट होते हैं बेस्ड ऑन योर RTO। RPO के केस के अंदर पैरामीटर्स जो आपके सेट होते हैं वो ये हैं कि पॉइंट इन टाइम रिकवरी का इंटरवल जो है वो आपका क्या है, आपके चेक पॉइंट्स कितने फ्रीक्वेंटली सेट हुए हुए हैं, और आप डेटाबेस का जो बैकअप है वो कितनी फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। फिजिकल बैकअप जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ले रहे हैं, और इंक्रीमेंटल बैकअप कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ले रहे हैं। इस तरह के पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं फॉर योर RPO कि क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी उतना ऑफकोर्स ओवरहेड भी ज़्यादा होगा, लेकिन आपका RPO कम हो जाएगा बिकॉज योर डेटा लॉस इज़ मिनिमल। अगर आपकी जो है फ्रीक्वेंसी कम है बैकअप लेने की, तो उसमें जो है वो आपका RPO जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डेटा लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसका ओवरहेड कम हो जाता है फिर। ठीक है, लेकिन मतलब ये था कि RPO के इसमें जिस तरह RTO में हम टाइम डिफाइन करते हैं कि इतनी देर का हमें बैकअप चाहिए है, RPO के इसमें डू वी डिफाइन दी लाइक द अमाउंट ऑफ डेटा कि इतना डेटा आमतौर पे डेटा होता है, लेकिन देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डू टाइम फॉर बोथ। के वन इज़ कि कितना डाउन टाइम है, एंड द सेकंड इज़ कि कितने टाइम का डेटा आप जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 10 मिनट का डेटा अगर लूज़ हो जाता है तो खैर है, या 5 मिनट का डेटा अगर लूज़ हो जाता है तो खैर है। ठीक है, ये दैट वुड बी अ कंप्लीट लॉस ऑफ डेटा। यस, दैट वुड। सीम्स लाइक कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा सही तरह से। लेट मी ट्राई अगेन। एक हम देखते हैं कि वन पैरामीटर इज फोकस्ड ऑन डाउन टाइम, द अदर पैरामीटर इज फोकस्ड ऑन लॉस्ट डेटा। RTO इज फोकस्ड ऑन डाउन टाइम ऑफ द डेटाबेस, कितना टाइम आपका डेटाबेस डाउन रहा है। उसमें डेटा कितना लूज हुआ है वो इममटीरियल है, RTO के अंदर इममटीरियल है। RPO के केस में नाउ द फोकस इज ऑन कि कितना डेटा लूज हो रहा है। ठीक है, द फोकस इज ऑन कि अच्छा डेटा हमारा जो है डेटाबेस रिकवर भी कर गया, एप्लीकेशन हमारी चल भी पड़ी है, डेटा हमारा कितना जो है वो लॉस आया, कितना डेटा जो है वो अब हमारा रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये कि दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज बीइंग स्टोर्ड
इन अ पर्टिकुलर टाइम। Yes. Yes. मतलब उस हिसाब से सेट होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैंने वो कहा कि some companies measure both parameters by time, even though RPO is focused on data. वो ये कहेंगे बजाय इसके कि वो कहें कि भाई 100 मेगाबाइट डेटा लूज हो जाए तो खैर है, right? They would say कि we can absorb 5 minutes worth of data or 2 minutes worth of data. और वो ऑन एवरेज ट्रांसलेट होता है कि ऑन 2 मिनट्स में इतना डेटा जो होगा वो आ सकता है। Yes, 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 exactly. तो ये अपने ऊपर है कि आप जो डिफाइन जब कर रहे हैं RPO को और RTO को, पैरामीटर्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो दोनों का जो फोकस है वो डिफरेंट है। RTO का टाइम के ऊपर फोकस है, RPO का डेटा के ऊपर फोकस है। So ये जो retention policy होती है, ये can it be a combination of both time and data? Like for example, जब आपने वहाँ पे intervals बनाए थे, I guess वो regular intervals थे. Let's say कि उस regular intervals में कोई ऐसा point आ जाता है जहाँ आपका data काफी सारा आ जाता है, you decide कि अभी time नहीं हुआ, लेकिन let's take up time now. Can it be a combination of both? It almost always is. RTO and RPO always go hand in hand. और जो पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने ट्यून करना होता है, जो आपने कन्फिगर करना होता है, दे आर ऑलवेज कन्फिगर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ RTO एंड RPO. ये दोनों इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं होंगे। And now this is a fairly involved thought के लिए, ऐसे लेकर कैसे define करते हैं कि वैसे ठीक ठाक आप इन सारे की tweaking बहुत करते हो जनरली। हर क्वेश्चन आंसर करने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने क्वेश्चन रिपीट करना था। आई एम सॉरी टू द लाइव ऑडियंस whoever. That's why you should be here. I guess they are supposed to YouTube channel as well. वो maybe should check out. जनरली ये दोनों इनवर्स रिलेशन में काम कर रहे होते हैं? नॉट नेसेसरली। इनका जो कंपटीशन होता है वो बेसिकली रिसोर्स और कॉस्ट के साथ होता है, क्योंकि द लोअर यू वांट योर RTO एंड RPO टू बी, उतनी कॉस्ट आप ज़्यादा इनकर कर रहे होंगे, उतनी जो है वो परफॉर्मेंस हिट आप ज़्यादा ले रहे होंगे, उतना रिसोर्स इंटेंसिव हो जाएगा आपका डेटाबेस। तो ये दोनों आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते जितना ये इनका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉस्ट के साथ। द बोथ ऑफ देम कैन proportionally go down and proportionally go up. I think what your question is कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई RTO जितना नीचे होगा उतना RPO ऊपर चला जाएगा, या RPO जितना नीचे होगा उतना RTO ऊपर चला जाएगा। जनरली क्वेश्चन ये था कि अगर जो इंटरवल है वो ज़्यादा है तो RPO में भी ज़्यादा होना चाहिए, इन द सेंस कि बार-बार आपका डाटा एप्लीकेट होता है कि डाटा लॉस कम से कम हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि जितना आपके जो है वो इंटरवल्स बैकअप के जो है वो ज़्यादा होंगे उतना आपका RPO इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन केस द क्लस्टर गोज डाउन देयर इज जो लास्ट बैकअप से लेके डाउन टाइम तक का जो दैट्स लॉस्ट, दैट्स गॉन। ठीक है। There's actually a question that was there for some time. ये ऑनलाइन आया हुआ कोई क्वेश्चन? Yes. अच्छा, yeah, जी। but that's a little earlier. Okay. Don't mind going back. Yeah, that's fine. So, so ये उमर हमारे आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने पूछा था कि in case of asynchronous replication during failover, how do you make sure that the secondary nodes are up to date with primary nodes while deciding new primaries? You can't. Again, just to repeat the question, in case of asynchronous replication, how do you make sure कि standby nodes जो हैं वो synced up हैं या caught up हैं all the way to the data point of when the primary node goes down. That's one of the downsides of asynchronous replication. You cannot. RTO and RPO, because that they sort of Exactly. categorize your- We will touch on that. We will touch on that later in this presentation. कि synchronous और asynchronous replication के जो हैं जो benefits and downsides हैं. But in case of asynchronous replication, ये guarantee नहीं दी जा सकती कि the standby nodes are always going to be in sync with the primary node. ये guarantee नहीं दी जा सकती। और standby के केस में दी जा सकती है। उस केस में भी यही है कि जितना आपका रेप्लिकेशन लैग है वो तो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल यू गो विद सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन के केस में प्राइमरी के ऊपर भी जो है वो कोई ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल इट गेट्स कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल योर स्टैंड बाइज कि हाँ ट्रांजैक्शन कमिट हो गई हुई है। तो अगर 3 replicas नहीं हैं इसमें और आपको जब हॉट स्टैंड है वो एक्नॉलेज ही तभी करेगा जब वो सारों के
यस यस, उस केस में हो सकता है. अगेन क्वेश्चन वॉज कि एसिंक्रोनस एप्लीकेशन के अंदर हाउ डू यू इंश्योर. एसिंक्रोनस में नहीं हो सकता. हॉट स्टैंड बाय जो होते हैं वो सिंक्रोनस एप्लीकेशन के साथ ही पॉसिबल है. हॉट स्टैंड बाय आप एसिंक्रोनस के साथ सेटअप ही नहीं कर सकते. हॉट स्टैंड बाय बिल्कुल जो है वो RTO और RPO आपके दोनों बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे उस केस में. बट देन यू incur a huge performance overhead. Because now, instead of committing to one node, you want to commit to at least 3 nodes, if not more. और हर एक की जो है वो आपकी एक वो कह लें कि दो डायरेक्शंस की जो है वो आपकी एक साइकिल चल रही है ट्रैफिक की. एक दफ़ा आपका डेटा जो है वो जा रहा है स्टैंड बाय नोड्स के साथ और फिर उसके बाद कंफर्मेशन वापस आ रही है कि यस द डेटा हैज़ बीन कमिटेड. सो अगेन वील टच ऑन दैट अ लिटिल बिट लेटर. शैल वी मूव ऑन? Okay, so this is another cluster configuration, interesting. और ये कुछ recent versions जो हैं Postgres के अंदर possible हुआ है. Logical replication got introduced in Postgres from version 9.6. और 9.6 onwards जो है वो logical replication काफ़ी जो है वो improve हुई है. And now what you can do with the current versions of Postgres is set up bi-directional replication for clusters. Which can give you the ability to set up active-active or master-master configuration. The only catch over here is this, कि मेरा mouse उसके ऊपर आ गया. The only catch is कि जो conflict resolution है data का वो आपको application level के ऊपर करना पड़ेगा. I'll get into that in just a little bit, but essentially this cluster is a shared everything architecture. Right? Anyone here who does not know what shared everything or shared nothing means? Okay, so shared everything architecture के अंदर essentially हर node के ऊपर तमाम data पड़ा होता है, सारा data होता है. तो every node shares all of the data. That's a shared everything architecture. In an active-active configuration like this one, all of these nodes have all of the data, which means that the application can read from and write to any node that it wants to. Can or does? Can. क्योंकि किसी एक नोड के ऊपर जो है वो राइट करेगी एप्लीकेशन या एक नोड से रीड करेगी, बाकी जो है वो रेप्लिकेट कर रहे होंगे. वो हर नोड के पास नहीं जाएगी एप्लीकेशन. So इस केस में red arrows are they like at the same time or? These are either or it could be different sets of data being written at the same time. ठीक है? तो set 1, set 2, set 3 राइट्स का maybe इसके शेयर जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए थे to highlight that point, but it can be different sets of data being written and read. एक्टिव 3 का रेप्लिकेट डू और नॉट. सॉरी मुझे समझ. एक्टिव 3 वाला जो आपके पास है इंस्टेंस वो एक्टिव 1 को भी डाटा रेप्लिकेट कर सकता है. यस, वो कर सकता है लेकिन उसे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स रिलाइंग ऑन एक्टिव 2 टू गेट ऑल ऑफ दैट डेटा. ठीक है, यू कुड हैव दिस एज वेल, लेकिन फिर उसके अंदर ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं एज यू रेप्लिकेटिंग डेटा. ठीक है, एक नोड से जो है वो डेटा लेना उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि एक ही जगह आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ जो है वो एक ही है. अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ट्रूथ आ जाते हैं, नाउ यू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नाउ यू गेट इनटू मर्जिंग ऑफ अपडेट्स, तो वो वाला एक डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर आ जाता है. वो एक्टिव 2 डाउन हो जाए तो फिर उस केस के अंदर ये है कि you could have one of two things. Yeah, you could set up this architecture so that when an active 2 goes down, तो active 1 and 3 start talking to each other. और हमने जो पीछे ये वाला आर्किटेक्चर बनाया था उसमें each of these actives could be the primary with 2 standbys each. So if this goes down, a standby takes over. Right? Help me understand that. क्या मतलब है? आपने कोई डेटा इंसर्ट किया लेकिन वो asynchronous replication है वो दूसरे नोड्स पे भी रेप्लिकेट नहीं हुई and then we read from some node. Yes. इस तरह के क्लस्टर के अंदर what the concept is of eventual consistency. अगर आप asynchronous जो है रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो ठीक है. So जो रेप्लिकेशन लैग जितना होता है उस लैग के अंदर
देयर कैन बी इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा, कि अभी जो है वो एक नोड के अंदर डेटा आया है लेकिन दूसरे के नोड के अंदर अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ. यस, दैट कैन हैपन. यस. ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिडंडेंसी. कुछ लोग जो है वो मल्टी राइट या मल्टी एक्टिव कन्फिग्रेशन जो है वो सेट करते हैं या इस तरह से कन्फिग्रेशन करते हैं टू स्केल द एप्लीकेशन, because now you know you've got multiple nodes that you can write to. इसका पिछले configuration के अंदर you only had one node to write to, which means कि write scaling जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल हो जाती है. तो you know some people use this to scale their write operations. Some people use this to achieve high availability, because if one of these nodes go down, application के पास और nodes होंगे available to write to and read from. Right? It depends on the use case. But you know the important thing is कि इसमें conflict resolution नहीं है, which means that if the application writes or updates data to more than one node, आपस में उनका conflict आ जाएगा, which is not supported by this architecture. So conflict resolution has to happen at the application level. The application cannot write the same data to two different nodes. But transactional support तो है. It's not कि I can do two different transactions the same row. Yes, not the same row, but the same table. Yes, for sure. So मेरा account है बैंक का classical example होता है. ठीक है. मैंने deduct करना था $100 और मैंने add किए थे $500. $100 मैं पहले deduct कर लूँ, $500 बाद में. तो वो दो different application का ये वाला case on the lowest scale, is it transaction or not? That's what I'm trying to understand. So let's say you know we are talking about 3 different rows of data, each having 3 columns. ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसमें जो है वो there is name 1, let's say this is data point 1, and let's say we have a number 100 over here. यहाँ पे जो है वो let's call it name 2. So essentially when you say कि भाई अगर एक एप्लीकेशन जो है वो एक नोड के ऊपर जो है वो R1 पे राइट कर रही है और दूसरे नोड के ऊपर R2 पे राइट कर रही है, दिस इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन अगर वो वाली एप्लीकेशन जो है वो कहती है नोड 1 के ऊपर जाके कि भाई इस 100 को अपडेट कर दो टू 200, और वो दूसरे नोड के ऊपर भी जाके कह देती है कि इस 100 को अपडेट कर दो 150 पे, नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो दिस कॉन्फ्लिक्ट आपने ये भी समझना कि you basically somehow you need to shard your access to particular rows to Right. different active. So in a very typical configuration like this, इसमें for example geofencing होती है. geofencing के अंदर जो है वो इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई इस नोड के अंदर आपने इस्लामाबाद का डेटा डालना है, इस नोड के अंदर आपने लाहौर का डेटा डालना है, इस नोड में आपने कराची का डेटा डालना है. ठीक है, नाउ देयर कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि जब कराची का डेटा अपडेट हो रहा होगा तो ज़ाहिर है लाहौर का डेटा इन पैरेलल अपडेट हो सकता है, एंड दिस रेप्लिकेशन विल मेक श्योर दैट ऑल 3 नोड्स हैव डेटा फ्रॉम ऑल 3 सिटीज़. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारी एप्लीकेशन लेवल पे होगी, क्योंकि हमने क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया कि किस नोड के ऊपर हमने किस सिटी का डेटा देखना है. ठीक है, राइट स्केलिंग भी हो गई, क्योंकि अब आप एक नोड के ऊपर जाके तीनों सिटीज़ का डेटा नहीं लिख रहे. ठीक है, और आपस में रेप्लिकेशन भी हो गई. ट्रैक भी करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हम किसी एप्लीकेशन से किसी टेबल में एंट्री करते हैं, वी गेट द प्राइमरी की एंड देन वी इंसर्ट इट एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल, और वो दूसरे नोड में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो डेटा. नहीं, वो तो रेप्लिकेट हो जाएगा ना. लेट्स से अभी नहीं हुआ तो फिर सो अगेन अगर वो जो उन जो रेप्लिकेशन लैग के अंदर की अगर आप बात कर रहे हैं, जो रेप्लिकेशन लैग की हमारे पास वैल्यू है कि भाई जो सिंक होने में जितना टाइम लगता है सारे नोड्स को, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी क्लस्टर के अंदर. विद इन द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन लैग देयर आर बाउंड टू बी इनकंसिस्टेंसीज, बिकॉज अभी जो है वो चेंजेस सारी प्रोपेगेट नहीं हुई. अनलेस एंड अनटिल यू इम्प्लीमेंट सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, उस केस में फिर ये वाला सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करेगा. उस केस में फिर एवरी नोड विल हैव डेटा सिंक्ड अप ऑल द टाइम.
ओके इस केस में जो है हमारे पास वी हैव एप्लीकेशन के हमें पता होगा कि देयर आर 3 एक्टिव 1 एक्टिव 2 एक्टिव 3 एंड देन वी स्पेसिफाई कि ये वाला डाटा राइट एक्टिव 1 के थ्रू करना है, यानी वी हैव 3 डेटाबेस कनेक्शंस टू ईच नोड. We could do that, or we could also have an interface layer between the application and this cluster. आम तौर पे जो है वो वैसे एप्लीकेशन डायरेक्टली बात नहीं कर रही होती, एक बीच में जो है वो कनेक्शन पूलर या एक जो है वो कुछ जो है ना वो एक मिडलवेयर रखा हुआ होता है जो कि इस सारी चीज़ों को राउटिंग कर रहा होता है. But that is part of the application or that is part of the code? Middleware, we'll call it middleware. There would be something in between the application and the database. तो एप्लीकेशन को एक डेटाबेस नज़र आएगा, आगे राउटिंग जो है वो उसको जो है ना थोड़ा सा ये अगले वाले के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्लियर जो है वो आया है कि यू नो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर रोड, सम काइंड ऑफ अ मिडलवेयर इन देयर जो कि उसको राउट कर रहा होगा आपकी. You could have the application talking directly to the databases, to those different nodes. You could also rely on the coordinator. ठीक है, इस केस के अंदर जो है ये मैंने एप्लीकेशन को डायरेक्टली दिखाया हुआ है बात करते हुए डेटाबेसेस से. इस केस में कोऑर्डिनेटर के ऊपर रिलाय किया हुआ है. But is this coordinator or middleware part of the application or is it part of the These tend to be separate tools that are available. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टूल है PG Pool के नाम से. ठीक है, that's a tool that sits on top of Postgres and the application talks to PG Pool like it would talk to Postgres. Exactly ये कोऑर्डिनेटर की जगह इमेजिन PG Pool लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एप्लीकेशन का वो पार्ट नहीं है, इट्स अ सेपरेट टूल. वो पोस्टग्रेस का भी पार्ट नहीं है. That's why I think middleware is probably the right term to use over here. Meaning that the application developer does not need to write that thing. It is नहीं इसके इस तरह के tools available हैं. ठीक है, that is probably the second last slide of this deck कि tools कौन से available हैं. ठीक है, so yeah, नहीं ये सारी चीज़ें अगर आपने खुद implement करनी हो तो वो तो ये बात सारी इसीलिए गायब हुए हैं. The example that you gave कि लाहौर का data इधर जाए और कराची का data इधर जाए तो that coordinator need to decide कि yes ये sharding. More than that, I think it will be an application logic definition as well. So coordinator ये नहीं define कर सकता क्या चीज़ लाहौर क्या चीज़. The application has to decide this is the. But he doesn't. The application does not have direct access to those nodes. नहीं वो coordinator को पता है but किस basis पे आपने sharding करना है. This is essentially a So form of sharding, right? so इस केस के अंदर because this is shared everything, यहाँ पे डेटा सारा का सारा शेयर हो रहा है. आई थिंक योर क्वेश्चन बिकम्स अ लॉट मोर रेलेवेंट इन दिस आर्किटेक्चर विच इज़ अ शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर. कि इन नोड्स के अंदर कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं हो रही. नोड 1 का जो डेटा है वो सिर्फ नोड 1 में है, नोड 2 का डेटा सिर्फ नोड 2 में है. ठीक है, इस केस के अंदर जो है वो क्या उस पिछले केस के अंदर हमने क्या कहा था कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इस्लामाबाद का डेटा एक्टिव 1 में जा रहा है, लाहौर का डेटा 2 में जा रहा है, कराची का डेटा 3 में जा रहा है, एंड देन दीज नोड्स सिंक अप विद ईच अदर. ठीक है, द एप्लीकेशन जस्ट नोज कि मैंने राइट कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है. ठीक है, ऑल्सो थिंक अबाउट कि यू हैव एन एप्लीकेशन, यू हैव अ मोबाइल ऐप. ठीक है, जिसके आपके यूज़र जो हैं वो मल्टीपल शहरों के अंदर जो हैं वो हैं, और दैट मोबाइल ऐप टॉक्स टू the database that is closest to it physically. तो जो इस्लामाबाद में लोग यूज़ कर रहे हैं मोबाइल ऐप, वो इस्लामाबाद का जो डेटाबेस है जो लोएस्ट लेटेंसी के ऊपर उनके पास अवेलेबल है, वहाँ पे उसका डेटा राइट हो रहा होगा. इसी तरह जो लाहौर में वो मोबाइल ऐप जो यूज़ कर रहे हैं वो उनका डेटा जो है वो क्लोजेस्ट डेटाबेस के पास जाके जो है वो राइट हो जाएगा. एंड फॉर एनी अदर सिटी एज वेल, जो भी क्लोजेस्ट होगा डेटाबेस वहाँ पे जाके राइट हो जाएगा. एंड देन द डेटाबेसेस देमसेल्व्स सिंक अप विद ईच अदर. ठीक है, दैट इज़ व्हाट दिस आर्किटेक्चर इज अस्यूमिंग. What this architecture assumes is कि तमाम जो users हैं वो एक coordinator के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, and then that coordinator is sharding the data, and no data is being shared across these nodes. Okay? In this case, anyone who has played with partitioning in Postgres, partition data. Okay. So partitioning का concept क्या होता है? Partitioning का concept होता है, let me try and मैंने कहा था व्हाइट बोर्ड काम आएगा. हाँ, वो माशाल्लाह से हैंड राइटिंग भी इतनी खूबसूरत है कि वैसे ही नहीं नजर आ रहा पता चलना कुछ.
वो यही मसला है ना, वो टाइप कर करके जो है वो लगता है लिखना भूल ही गए हैं। ओके, सो पार्टिशनिंग क्या होती है कि टेबल, लेट्स कॉल पेरेंट टेबल, and it has certain attributes to it. Let's say उसकी जो है वो प्राइमरी की हमारी जो है वो है month, या actually let's call it date, right? You can define child tables from this, और इसकी डेफिनेशन के ऊपर आप कह दें कि हमने ये पार्टीशंस क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन द मंथ ऑफ द डेटा, ठीक है? सो एज डेटा कम्स इनटू दिस पेरेंट टेबल, जनवरी का डेटा जो है वो इधर आ गया, फरवरी का डेटा इधर आ गया, मार्च का डेटा इधर आ गया, एंड सो फोर्थ, ठीक है? दिस इज पार्टीशनिंग एंड दिस इज ऑटोमेटिक इन पोस्टग्रेस। जो पार्टीशन है, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्राइटेरिया डेटा को पार्टीशन करने का, एंड एज द डेटा कम्स इन इट गोज इनटू द अप्रोप्रिएट टेबल, एंड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा you don't go querying into each of these tables. Postgres knows exactly which tables आप उठा के लेके आना है depending on कि आपका where clause जो है वो query का क्या लगा हुआ है, और उसके अंदर month कौन सा specified है। तो अगर February specified है तो वो सीधा आएगा यहाँ पे, इधर से डेटा उठा के ले आएगा, ठीक है? So this is an example of how a shared nothing architecture works. But then to give this the resilience, we have to add the primary statement in this, right? Exactly. We have to, sorry? To give this the resilience, we have to add the slaves. Yes. Node 1 को भी highly available करना है। प्राइमरी सेकेंडरी के हाँ, so you see, I go back to my earlier assertion कि आपका जो है ना 3 node cluster तो एक minimal आपका जो है ना वो unit है, और जहाँ पे भी आपने node कोई बनाना है तो वो 3 node जो है वो cluster आपका वो minimal unit होगा. In this particular case, if you want node 1 to be highly available, it has to be a 3 node cluster. Because this is a Node scaling 2. thing. This is not a Exactly, use case जो है वो more than redundancy, this is more This is more optimization. ये आमतौर पे horizontal scaling के लिए यूज़ होते हैं, horizontal scaling है ये, ठीक है? So yeah, the primary difference between this architecture and this one is जो active है, that is shared everything. जो sharding है, this is shared nothing, right? Okay, and then ये partition जो डेटा की है, ये basically dependent है application के ऊपर, क्योंकि इस केस में you can have a chance कि hotspot या celebrity point एक रख जाए, और इस केस में बटे अगर web में एक massive amount of data आ जाता है और we got a hotspot basically, और वो उसको handle करना is quite complicated. तो ये I think कोई generic rule नहीं है, depends on application के style की है, right? आई थिंक ये आउटलाइन केसेस जो हैं वो तो एग्जिस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर और हर आर्किटेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है? यू कुड डिसाइड एट वन पॉइंट इन टाइम कि मैंने पार्टीशन करना है डेटा बेस्ड ऑन मंथ्स, एंड यू एंड अप ऑब्जर्विंग कि अच्छा किसी एक महीने के अंदर तो बहुत सारा डेटा आ गया और बाकी महीने जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहे हैं, ठीक है? लेट्स से आप एक जो है वो एक टिपिकल चलें, लेट्स गो बैक टू दैट सेम मोबाइल ऐप थिंग जो कि आप डिफरेंट शहरों के अंदर जो है वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है? सॉरी, ईद के टाइम के ऊपर जो है वो बिल्कुल डेड हो गई है ट्रैफिक, ठीक है? अब आप कहें कि भाई इस महीने में तो कोई ट्रैफिक आई ही नहीं है, तो इस पार्टीशन का मुझे फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा, राइट? अगले साल जो है वो कोई और मंथ होगा जिस पे ईद आई होगी, और वो जो है वो डाउन टाइम का जो है वो मंथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. सो आई थिंक कि जो पार्टीशन क्रिएट करना
जिस टाइम के ऊपर अगेन ये तो हम एग्जांपल्स मोटे मोटे और जो चीज़ ज़हन में आती जा रही है मैं भी बोलता जा रहा हूँ तो ये जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं और जब आप पार्टीशन तो ये रूल्स सेट करते हैं यू हैव टू एनालाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर यूज़ केस यू हैव टू अंडरस्टैंड योर यूज़र बेस एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन अकॉर्डिंगली राइट। तो ये वेरी करेगा फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और ये भी हो सकता है कि कोई एक दफ़ा आप पार्टीशन का रूल जो है वो सेट कर दें एंड देन यू लेटर फाइंड आउट कि नहीं यार दिस वाज नॉट राइट, ठीक है, एंड देन यू चेंज दैट रूल, यू चेंज इट बेस्ड ऑन द एक्चुअल वर्कलोड दैट आर कमिंग इन। ये तो डीबीएस के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है इसको डिज़ाइन करते हैं। फेल ओवर जिधर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ रहा है वहाँ पे आपने फेल ओवर डालना है। बट यू राइट, आइडेंटिफाई आपने बिल्कुल ठीक किया है। इस केस में जो है वो कोऑर्डिनेटर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अनलेस एंड अनटिल यू बैक इट अप। और यू कुड ऑल्सो से कि भाई हमने शार्डिंग करनी है और शार्डिंग के साथ जो है वो एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन डालनी है और हर नोड के साथ जो है वो तो स्टैंड बाय भी रखने हैं। Okay. It makes a lot of sense for me to know where my rights are going. Fair enough. और again ये what I've tried to do with all of these images is कि मैंने units उठाए हैं कि भाई ये जो है configurations हो सकती हैं, इनका mix and match आप कई डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, कई तरीकोों से किया जा सकता है। और again आप जितना mix and match करते जाएंगे उतनी आप cost escalate करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड बॉटलनेक आमतौर पे जो है ना वो आमतौर पे डॉलर अमाउंट्स के ऊपर आके आती है। भाई इतने जो है वो बजट है, बजट ख़त्म हो गया, अब आप स्केल करना बंद कर दें। सो या एंड देन यू नो ये जितने भी हमने आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, यू कैड एक्चुअली स्केल इट ग्लोबली। कोई वो ऐसा नहीं है कि यू आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफी एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ग्लोबल, it's also about the platform and the infrastructure that you're using. Okay? It could be in your office, it could be on the cloud, it could be a virtualized environment, it could be a mix and match of all. Okay? Node 1 आपका जो है वो on-prem है, Node 2 आपका जो है वो cloud के ऊपर हुआ है, Node 3 जो है वो आपका दूसरे cloud provider के साथ है, Node 4 आपका let's say जो है वो किसी data center के अंदर पड़ा हुआ है. It could be a mix and match. All you need to ascertain is that the nodes are able to communicate with each other. Also, keep in mind कि जितना ज़्यादा जो है वो आप nodes को segregate करेंगे, latency बढ़ती जाएगी, ठीक है, replication lag बढ़ता जाएगा. Which actually brings me to the, you know, I think there was a question थोड़ी देर पहले on synchronous versus asynchronous replication. The simple difference is कि synchronous के केस के अंदर as you are writing to different nodes, it ensures that data is immediately written to all nodes. The only way a transaction completes is when the application knows that the data has been written. Asynchronous के केस में data write हो जाता है, commit हो जाता है, and then the application assumes that replication is going to take care of it. Eventual consistency. Main difference इसके अंदर जो है क्या है? In case of synchronous replication, there's a performance overhead because you are now writing to all nodes, and you are incurring the cost of communication between the nodes and getting a confirmation back from your standbys कि हाँ भाई data सारा write हो गया है. In case of asynchronous replication, the risk that you're taking is that there is a chance of inconsistency somewhere, but you gain on performance. अब select कैसे क्या करना है आपने? Asynchronous करनी है या synchronous replication करनी है? It really depends on कि आपका use case क्या कहता है. Can you absorb a possible inconsistency in order to gain performance, or whether you don't care what performance hit you get, आपको data हमेशा consistent चाहिए. That's the decision point essentially between the two types of replication. ये दोनों replications इकट्ठी भी हो सकती हैं, किसी दो nodes के दरमियान में आप synchronous कर दें, किसी एक और यानी तीसरे node के साथ जो है वो asynchronous कर लें. हमने जो है वो एक primary और दो standbys हमने जो है वो दिए थे. You could say कि एक standby को जो है वो synchronous replication हो और दूसरा standby जो है वो कोई off site किसी और जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके साथ जो है वो asynchronous replication चल रही है. It could be a mix and match. But between two nodes,
it cannot be synchronous as well as asynchronous application. It has to be one of these two. Now, I want to talk about 4 major challenges that we face as we go and go about setting up clustering. ये वाले कुछ हमने थोड़ा बहुत जो है वो हमने डिस्कस भी किए हैं as part of the previous slides and as part of answering जो questions आपके आ रहे थे. So rush through some of those in the interest of time, जो कि हम पहले over हो चुके हैं या काफ़ी. Okay, तो yeah, we'll get into that, but nothing to do with my presentation. बस तो थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी, तो वो काफ़ी स्लाइड्स जो है वो डीप टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर हो गए, तो एक बीच में ब्रेक दे दें उसकी. तो वो एक बड़ा मैंने एक नया इंटरेस्टिंग वो 2-liner जो है वो कहीं पे पढ़ा था. तो person 1 saying to person 2 के your job isn't threatened by AI if it didn't require intelligence to begin with, right? And the second guy goes, I don't understand. You're safe. Don't worry. If you don't understand this, you're safe. But yeah, अगर किसी ने जो है वो use किया है ChatGPT, I'm sure all of you are now using ChatGPT a lot more than you're using Stack Overflow. But I think the world is beginning to realize that it's just another dumb colleague that it is. उसी तरह की जो है वो बीच में बोंगियाँ मार रही होती है ChatGPT भी, जिस तरह कि हम लोग खुद भी जो है वो mess up करते हैं. So challenges in clustering. The first thing, split brain. Anyone here who has heard about what a split brain is? Okay, you've heard about everything. You know about everything. Anyone else? Split brain. Okay. So बड़ा वो ना एक वो खतरनाक सा टर्म लगता है split brain, तो कि एकदम से डर लगता है, और डरना चाहिए भी, क्योंकि ये सिचुएशन जो है कुछ इसी तरह की होती है. The brain of the cluster essentially does get split. How does that happen? If there is a communication breakdown between the nodes, and it so happens that 2 nodes at the same time start thinking that they are the primary. एक क्लस्टर के अंदर 2 प्राइमरीज नहीं हो सकते, या 2 से ज़्यादा प्राइमरीज नहीं हो सकते. If 2 or more nodes start acting as primaries, now you have a split brain scenario. अब 2 दिमाग हो गए हैं क्लस्टर के, जो कि is never good. You need to have 1. Now, how does that happen? Network issues आ रहे हैं, congestion है, अभी signals पहुँचे नहीं हैं, failover जल्दी हो गया है, और one of the nodes start thinking कि भाई उसने जो है वो primary को take over कर लिया है, starts taking requests from the application, and now you've got all of a sudden 2 nodes, एक जो है down नहीं हुआ और दूसरा भी जो है वो उसने primary को take over कर लिया है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टिपिकल जो हैं वो आपके फेलियर्स बग्स के थ्रू भी आ जाते हैं. किसी तरह से जो है वो फेलिंग हार्डवेयर हो, किसी तरह से जो है वो कहीं पे इस तरह से हो जाए कि कहीं पे हैंग कर गया है आपका सॉफ्टवेयर, कहीं पे स्टक हो गया है सॉफ्टवेयर. इट कुड कॉज सिचुएशंस लाइक दिस, एंड there's always ह्यूमन एरर इन्वॉल्व, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कन्फिगरेशंस होती हैं ये ह्यूमन बींग्स ने ही की होती हैं, एंड there are human errors involved in here. In any configuration, and it could cause a potential split brain situation. It becomes very challenging क्योंकि अगर आपके पास जो हैं वो rights 2 different nodes के ऊपर होना शुरू हो जाए, तो there's a big chance of inconsistency of data, there's a chance of loss of data, and well, the entire cluster is now unreliable because you don't know, it's no longer a single source of truth. You don't know कि किस master के ऊपर जो है वो actual data exist कर रहा है, right? So that's what a split brain is. How do you prevent it? There are different ways to do it. Quorum based voting होती है. जितने nodes हैं cluster के अंदर, all of them can be configured to vote for who the master is, who the primary is, not master, primary, who the primary is, or they can stop the cluster from functioning अगर quorum achieve ना हो तो. If there's a split decision, अगर quorum जो है वो कम है, let's say it's a 3-node cluster and there are only 2 votes that come in, और दोनों जो हैं वो अलग-अलग votes हैं, तो the cluster will stop working because they don't want to carry on with the inconsistency.
जितनी रिडंडेंसी डालेंगे, जितने नोड्स जो हैं वो फेल ओवर का सिनेरियो आप इतना जो है वो आप सॉलिड बनाएंगे, उतने चांसेस स्प्लिट ब्रेन के कम हैं. देयर आर सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल टू रिजॉल्व स्प्लिट ब्रेन सिचुएशंस, उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं. And network segmentation, if you keep your nodes in separate networks, the chances of a single network impacting multiple nodes is reduced. तो वो जो है वो आपको कंजेस्शन से भी बचा लेता है और वो एक्चुअल किसी एक नेटवर्क के डाउन टाइम से जो है बचा देता है आपको. इफ़ अ स्प्लिट ब्रेन हैपन्स, व्हाट डू यू डू देन? अब हो गया, प्रिवेंशन जो है वो आपकी जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी या प्रिवेंटिव टेक्निक्स आपकी पूरी नहीं थी या प्रिवेंटिव टेक्निक्स के बावजूद स्प्लिट ब्रेन हो गया, अब क्या करना है? देयर कैन बी अ थर्ड नोड दैट एक्ट्स एज अ टाई ब्रेकर. दो जो है उन्होंने अगर एज अ प्राइमरी जो है वो अपना कुछ संभाल लिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अ थर्ड नोड विच इज़ वेरी सिमिलर टू अ कोरम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, अ थर्ड नोड कैन बी अ टाई ब्रेकर. कंसेंसस एल्गोरिथम्स जो हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कुछ टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं. पैक्सोस एंड राफ्ट प्रोटोकॉल्स आर द मोस्ट फेमस वंस. I am not smart enough to understand what these protocols are and how they're implemented. ये काफ़ी जो है वो mathematically intensive होते हैं. जिन लोगों ने बनाए हैं ठीक बनाए होंगे, implementation मिल जाती है, ठीक है. If anybody is interested, you can look them up. बड़े detailed articles जो है वो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे. Honestly मुझे समझ नहीं आती इसकी. And then there's always manual intervention. A skilled DBA can go in and understand where the split brain is occurring. किस नोड को शट डाउन करने की ज़रूरत है, किस नोड को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है और कैसे जो है इनकन्सिस्टेंसी को रिजॉल्व करना है. इट कुड बी अ मैनुअल एफर्ट एज वेल. आगे क्यों नहीं जा रहा? ओके. द सेकंड चैलेंज, नेटवर्क लेटेंसी. इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो हमने टच किया था. लेटेंसी एसेंशली मीन्स कि योर पैकेट्स आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इसमें जितना डिले आ रहा है दैट इज़ नेटवर्क लेटेंसी. And the challenge that it presents is कि it delays replication. Data replication जो है वो delay हो जाता है. हमारे जो हैं वो signals जो हैं वो false signals trigger हो सकते हैं. It could trigger a failover when a failover is not required. Right? It could present challenges like this. And it's caused by network congestion is an obvious issue. बहुत ज़्यादा traffic जो है वो अगर आ रही है network के ऊपर, it will cause congestion and it will cause the network to slow down. डिस्टेंस जो है वो नेटवर्क का वो बहुत मैटर करता है. जितने हॉप्स आपके आ रहे हैं नेटवर्क के अंदर वो आपकी लेटेंसी इंक्रीज करते जाएंगे. डिस्टेंस जितना आ रहा है लेटेंसी आपकी इंक्रीज करता जाएगा. एसेंशली नेटवर्क आपका जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा होता है. अगर फाइबर ऑप्टिक पे है तो कॉपर बेस्ड है तो वो और स्लो हो जाता है. इवन फाइबर ऑप्टिक स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो रिलाई कर रहा होता है एंड यू कैन नॉट रियली ट्रांसमिट अ सिग्नल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. Quality of infrastructure is of significant importance because low quality hardware is going to cause latency. Cables आपकी जो हैं वो low quality की अगर डली हुई हैं, routers low quality के हैं, infrastructure अगर low quality का है, it will cause latency. And then there are configuration parameters of the database itself. दो example मैंने यहाँ पे share किए हैं, max connection and TCP keep alive idle. किसी ने कभी इनकी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट से हिलाया है? किस वैल्यू को क्या किया है और क्यों किया है? क्या चीज़ 10 सेकेंड्स थी? ये कीप अलाइव? ठीक है. वो हमारा कनेक्शन एप्लीकेशन सब ब्रेक हो रहा था. ओके. तो API फेल हो रही. ओके. तो आइडल टाइम आता है तो उसको 1 मिनट से 10 सेकेंड से बढ़ा दिया था. Okay, ठीक है. So that was one particular case where you needed to increase the keep alive idle time, right? Now, what happens with that increase is that actual idle connections can start taking up the max connection space. Okay, वो idle हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन hawk करके बैठे हुए हैं आप database को, और कोई भी और नहीं आ पा रहा. Now you're increasing latency in the database. Okay, so it has to be a balance between the two. कि यस वो यानी मे बी कनेक्शन जो है वो आपका ब्रेक हो रहा था एप्लीकेशन से और आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने इस चीज़ को भी बैलेंस करना है फिर कि इफ़ यू टेक इट टू हाई अ वैल्यू, नाउ यू आर इंक्रीजिंग लेटेंसी इन योर नेटवर्क इन योर अदर कनेक्शंस. तो इसी तरह मैक्स कनेक्शंस जो हैं वो इफ़ दैट इज़ टू स्मॉल अ वैल्यू
That means that newer connections cannot be established to the database. पिछले connections का terminate होने का वो इंतज़ार करेगा and that can cause latency. तो ये parameters जो हैं ये use case के लिहाज से थोड़े से tune करने होते हैं and that is how you can how an incorrect configuration can cause increased latency. How can you prevent false positive due to network latency? A false positive for a failover. ठीक है नेटवर्क का आपके पास जो है वो सिग्नल देर से आया for your witness node as it is monitoring the primary. ठीक है द प्राइमरी का जो है वो अगर सिग्नल देर से आया है द विटनेस माइट assume that the primary has gone down. failover ट्रिगर कर दे और बाद में पता चले कि अच्छा प्राइमरी तो अब था. If you deploy nodes in proximity, distance आपका कम हो जाता है, latency कम हो जाती है. Quorum based again, this is a recurring theme. Democracy जो है वो apparently works in many different ways. तो quorum जो है वो आप कर सकते हैं. अगर quorum जो है वो achieve नहीं हुआ तो the cluster will keep on waiting for the signal. It will not fail over. Configuration parameters की अभी हमने discussion की कि इसको जो है we want to make sure कि latency increase ना कर रहे हो. Networking equipment, it's always worth paying for high quality equipment. And then जो monitoring and alerting systems हैं आपके, that can also help you understand कि कहाँ पे latency आ रही है और कहाँ पे it's just a delay in communication, not an actual node going down. Your monitoring tools can assist you in doing that. The third challenge is false alarms. Again, very closely connected to the previous topic. False alarms are raised when, or we call it false alarms when an alert is raised, but in reality everything is fine. ठीक है वो alarm जो है वो ring हो गया है लेकिन आग कहीं नहीं लगी हुई थी ऐसी जो है वो बच गया alarm. And the challenge over here is that with a false alarm, you could trigger a failover when it's not actually required. और failover पे अंदर हमने देखा है कि कुछ ना कुछ जो है वो आपका लॉस होता है, कुछ टाइम जो है वो लगता है, डेटा आपका लूज़ हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपका डेटाबेस डाउन हो सकता है. यू डोंट वांट टू हैव फॉल्स फेलोवर्स. फेलोवर सिर्फ आपका तब होने चाहिए जबकि एक्चुअली आपका प्राइमरी डाउन हो गया है. फॉल्स अलार्म से अगर आपका फेलोवर हो जाता है दैट इज़ दैट कैन लीड टू डिसरप्शन. Configuration parameters agar incorrectly set, and that's one cause of a false alarm. Temporary network issues, temporary outage of a particular node can cause them. And always present are the software bugs, hardware issues and human error जिसकी वजह से false alarms trigger हो सकते हैं. How do you prevent them? Configuration based on best practices. Make sure that your use case is being handled properly. Up to date रखना अपने सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर के फर्मवेयर को. It's very important because software के vendors भी they keep on discovering bugs, they keep on discovering issues and they keep on fixing those issues. So you want to be at the latest versions. Test it regularly. Again ये एक recurring theme होता है किसी भी जो है वो DBA की जॉब के अंदर, किसी भी clustering के अंदर. You want to make sure that your cluster is working as you expect it to work and you need to test it per your use cases all the time. और multiple monitoring tools ये करते हैं कि they create redundancy in monitoring as well. Again single point of failure अगर हमने एक monitoring tool को बना दिया है और उसने अगर एक alarm trigger कर दिया है, you might end up thinking that the node is actually down whereas it was an issue with the monitoring tool. So multiple tools configured in multiple ways can help you create redundancy in monitoring or cross-reference कर सकते हैं in case one of those tools triggers an alarm. Now, if an alarm is actually triggered and you know that you get to know that it was a false alarm, make sure that you check the logs and that you determine what triggered it so that you prevent it from happening again. Make sure कि जितने stakeholders involved थे, चाहे वो application developers हैं, चाहे वो DBAs हैं, चाहे वो architects हैं, they know that it was a false alarm that was triggered so that they can go for remediation efforts. And then continue to monitor the health of the cluster to ensure that a false alarm is not triggered again. So you need to understand कि root cause उसका क्या था false alarm का, fix it and keep monitoring it.
The last point over here, data inconsistency. हमने replication lag की भी बात की, हमने बात की कि at a given point in time, a cluster may be in an inconsistent state. And एक तो वो एक स्टैंडर्ड जो आपका जो रेप्लिकेशन लैग की वजह से इनकन्सिस्टेंसी आती है वो तो होती ही है, बट देयर कुड आल्सो बी अदर केसेस वेयर द डेटा वेयर योर क्लस्टर बिकम्स इनकन्सिस्टेंट विद ईच अदर, वेयर द नोड बिकम्स आउट ऑफ सिंक. एंड द चैलेंज दैट इट प्रेजेंट्स इज कि डिपेंडिंग ऑन विच नोड द क्वेरी इज गोइंग टू, it could present different results. You always want your database to be the single source of truth. You don't want different results coming in based on different nodes that are being queried. Typically caused by सबसे जो इसका frequent cause होता है वो replication lag है. When data is taking too much time to replicate from one node to the other, it can cause inconsistency. As you are upgrading your schemas and your database, वो upgrades propagate होने में time लगता है, that causes inconsistency. Network issues, hardware failure, software failure, human errors, all are causes that can cause consistency in data. How you prevent it? Well, one of the ways to prevent it is synchronous replication. Okay? You incur a huge performance overhead, but you make sure that your data is consistent. अगर सारे nodes के ऊपर replicate नहीं होता data, तो वो primary node भी उसको roll back कर देगा. But of course, you have to have a balance. Load balancer जो है वो आप इसको इस तरह से भी configure कर सकते हैं to incorporate for the eventual consistency of your cluster and make sure कि एक application से या एक analytical platform से जो queries आ रही हैं वो एक ही node के ऊपर जाएं हमेशा. वो अगर दो डिफरेंट नोड्स के ऊपर दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जाएंगी तो द चांसेस ऑफ अ क्वेरी रिटर्निंग टू डिफरेंट रिजल्ट्स इज हाई. लेकिन अगर एक ही नोड के ऊपर हमेशा जा रही है एक ही तरह की क्वेरी तो कंसिस्टेंसी आपकी अचीव हो जाएगी इवन इफ इट इज़ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. मॉनिटरिंग टूल्स, I think this has been a constant part of all of the prevention measures. Monitor करना बहुत ज़रूरी है आपका डेटाबेस को for any anomalies. And instead of doing hot upgrades, you could schedule downtimes of your database of your application and then do run upgrades in order to make sure कि inconsistency कोई ना हो. Again, this depends on your application. This depends on how much downtime you can afford. अगर downtime afford. So ये बात है. So data inconsistency maintenance upgrade से कैसे link होती है? If you are upgrading a hot system, Right. the upgrade takes time to propagate throughout the cluster. Right? And during that time, data will be inconsistent between the nodes of the cluster. That's if the upgrade does something like that to आपने schema upgrade किया, ठीक है? ये जो हमारे था C1, C2 और C3 थे, इसमें columns थे. Let's say आपने schema upgrade किया and you add a C4. This will go to your primary node first. यहाँ पे C4 चला गया and it will take some time to propagate to your standby 1 and to your standby 2. And the time it takes to propagate, उस time के दौरान S1 के अंदर only C1, C2 और C3 exist करेंगे, C4 exist नहीं करेगा. So if you query from the primary at that time, so basically हमने inconsistency को trade off कर दिया with some downtime or something. yes. So you bring the cluster down, you upgrade the entire thing, and then you get it up again. Right? So that's a maintenance window. वो अक्सर जो है ना वो आए होते हैं वो आपके SMS आते हैं बैंकों से, नयाटेल से आते हैं कि भाई रात को 2 बजे जो है वो डाउन कर रहे हैं, वो यही कुछ हो रहा होता है पीछे. And then तो रेगुलर टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड. जितने आपके यूज़ केसेस एंड एप्लीकेशन जो है वो इट ऑलमोस्ट नेवर हैपन्स कि जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन डिज़ाइन की होती है उसी तरीके से अगले 5 साल 10 साल तक वो चलती रहे. एप्लीकेशन इवॉल्व करती है, सॉफ्टवेयर इवॉल्व करते हैं, यूज़ केसेस इवॉल्व करते हैं, एंड विद दोज इवॉल्व्ड यूज़ केसेस एंड एप्लीकेशन यू नीड टू कॉन्स्टेंटली टेस्ट आउट योर डेटाबेस क्लस्टर एज वेल सो दैट इट कंटिन्यूज टू बिहेव as expected.
अगर इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है उसको रिजॉल्व कैसे करना है. You need to resync all of your nodes, maybe stop the application, make sure that all your nodes are in sync and then restart the application. You can roll the entire cluster back to a particular point in time. अगर इस तरह की जो है वो inconsistency आ गई है कि जो sync उसका नहीं हो सकता, आप उसको जो है वो बैकअप से रिकवर कर सकते हैं, कोई पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हैं, एंड देन continue to monitor such that the inconsistency does not develop again. Important to do that. And yes, doing all of this is really, really hard. That's why DBAs exist. That's why DBA की जो है वो नौकरियाँ हैं, which are by the way increasingly going obsolete. Database की दुनिया के अंदर जो है ये तो अब it's a known fact कि DBAs को आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो automate किया जा रहा है. And there are 3 reasons listed in this slide of why you could actually handle all of this clustering without DBAs, or at least if you're smart enough, you could do at least a part of a job of the DBA yourself as well. ये 3 tools हैं Postgres की दुनिया के अंदर, और भी tools available हैं, but these are the 3 tools that I tend to lean on the most for clustering. Rep Manager, short for Replication Manager, URL इसके अंदर दिया हुआ है. It's licensed under GPL version 3. It provides automatics failover and it can help you manage your replication cluster. Okay? Basic command line type का जो है ये tool है. It was created initially by Second Quadrant and is now owned by EDB. PG Pool 2, इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है. इसके जो बल्कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यार इसका नाम चेंज करो, बिकॉज इट साउंड्स लाइक इट्स अ कनेक्शन पूलर वेयर इट्स अ कंप्लीट क्लस्टर मैनेजमेंट सोल्यूशन. इट्स लाइसेंस्ड, अपना इन्होंने लाइसेंस बनाया, बड़ा सिंपलिस्टिक सी जो है वर्डिंग यूज़ करके बनाया है, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू द BST एंड द MIT लाइसेंसेज विच इज़ वेरी लिबरल. तो बेसिकली यू कैन डू प्रीटी मच एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद दिस टूल. It acts as a middleware between मैंने बल्कि शायद middleware का एग्जांपल देते हुए PG Pool का शायद नाम भी लिया था within the conversation. So it acts as a middleware between the client, the application and the Postgres cluster. Or when the application connects to the database, it doesn't connect to the database directly, it connects to PG Pool. और PG Pool आपको जो है वो connection pooling भी देता है, load balancing भी देता है, caching देता है, clustering देता है, failover, everything. And then the third tool over here is Percona. It's licensed under MIT, or it provides you a template for high availability clusters. और again ये failover और clustering और replication जो है ये manage करता है आपके लिए. And that brings me to the end of the presentation of what clustering is, what are the challenges associated with it, what are the tools that you can possibly use to work with it. The advice is to keep calm and continue using Postgres. हर मसले का जो है solution available है. It's just about looking at the right places and talking to the right people. Happy to take any questions. And the hiring tag is not to pluck people away from this group. I was about to close that quickly. ई मम्बा का कोई बंदा मेरे पास आएगा तो सीधा जो है वो उसके रेज्यूमे सीधा अफान के पास जाएगा वापस. But yeah, it's here primarily because if you know somebody who knows Postgres and is looking for a job, we're always in the lookout for good talent. Thank you so much. Well, thank you. अच्छा full distributed systems का lecture cover हो गया साथ में. We should remember all of this. I think there's stuff over there, but we should first gather and have like a quick picture. Yes. तस्वीर के लिए तो आवाज़ की ज़रूरत नहीं है ना.